Aspirants and students and viewers, welcome to another video of the basic and important golden rules of English, which is very important for the both the law admission test and for the various jobs. These golden rules are very important when you are appearing in one paper MCQs or for the writing of the both of these. Number one, we have modal auxiliaries are not used together. Likewise, we have a sentence we should must do it. Now, should and must, this can not be used at the same time, but we use when we use them a conjunction, like he should and must do it. He should and must do it. Here, and is a conjunction which separate these both. In another formula, another rule, numerical adjectives are not used for countable noun only, and they show how many persons or things are mean to in what order of person. For example, we have a sentence, I have taught you little things. अभी यहाँ पर तो little things common sense ही नहीं बन रहा, so we use I have taught you a few things. यहाँ पर जो एक क्वांटिटी है उसमें एक अनकाउंटेबल और काउंटेबल का काफ़ी डिफरेंस है. आते हैं हम थर्ड पे, व्हेन कार्डिनल एंड ऑर्डिनल आर यूज टुगेदर, ऑर्डिनल प्रीसीड्स द ऑर्डिनल. जो कार्डिनल होता है वो एक हाई रैंक होती है और जो ऑर्डिनल होता है उससे बिलो द सेकेंड रैंक होती है. जैसे हमारे पास एक सेंटेंस से द 4 फर्स्ट बॉयज़ विल बी गिवन द चांस. नाउ the correct sentence is the first 4 boys will be given the chance. So this is the correct sentence we have. अच्छा, अगर हम rule number 4 में आते हैं, here we have a 4. When a cardinal and ordinals are used together, ordinal precedes for. अच्छा, ये हमारे पास हो गया, it's repeated. Okay, ignore it. Now in rule number 6, later, latest refer to time and later and least refer to the position. इसमें काफ़ी difference, but we always confuse. Like I reached at 10 a.m. but he was later than I expected. Now अगर हम सही sentence and correct sentence की बात करें तो we have a difference, like I reached at 10 a.m. but he was later than I expected. अच्छा, ये जो लेटर है ऊपर वाला, दिस इज डिफरेंस. ये एक पोजीशन, लेटर एंड लास्ट रिफर टू द पोजीशन. ये जो बात करते हैं, ये जो सेंटेंस पे अगर यूज़ होते हैं तो दीज आर ऑल फॉर द पोजीशंस. में इसको हाईलाइट कर लेता हूँ. मगर यहाँ पर जो है वो लेटर होगी, जो जिसकी लेटर की माना है वो लेट है. फार्दर मीन्स मोर डिस्टेंस आर एडवांस. Further means addition. Now in this rule we have the two confusing words. एक है farther और दूसरा है further. अभी further जो है उसकी माना वाज़े है, वो है addition, and farther it is quite different, जो कि हमारे distance के लिए यूज़ होता है. अभी sentence में for example, he insists on further improvement. But this is wrong. The correct sentence is he is instead on further improvement. Further means additions. So here we have a difference using our usage of these words, but they always confuse. अच्छा, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, रूल नंबर 7 पे. So we have just a second, I am going to highlight this. So each is used in speaking of 2 or more things. Every is used only in speaking of more than 2. अगर हमारे पास each का यूज़ होगा तो we have only speaking of 2 things, and every used for more than 2 things. वो कितनी भी हो सकती हैं. Like every of the 2 boys will get a prize. But जो इसका करेक्ट सेंटेंस है, ईच ऑफ द 2 बॉयज़ विल गेट अ प्राइज़, ये एक करेक्ट हमारे पास सेंस भी दे रहा है
ओ ये इसका करेक्ट यूज़ भी है। अच्छा, नाउ मूविंग टू द फार्मूला नंबर 8, इन कंपेयरिंग टू थिंग्स द कंपेरेटिव शुड बी यूज, द सुपरलेटिव शुड नॉट बी यूज। सबको जैसे पता है, मगर हमें रूल्स मालूम भी होते हैं, बट ऑलवेज वी डू मिस्टेक्स व्हेन वी आर गोइंग टू सॉल्व द एक्सरसाइज। और जैसे कि हम लेट में अपीयर होते हैं तो उधर हमारे पास सेंटेंस होते हैं और डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं, बट ऑलवेज वी मेक मिस्टेक्स। क्वेश्चन आते हैं हम सेंटेंस पे, विच इज़ द बेस्ट ऑफ द टू, विच इज़ द बेटर ऑफ द टू। अभी देखें, गुड, बेटर एंड बेस्ट। बेस्ट जो है वो एक सुपरलेटिव डिग्री है एंड इट विल नॉट बी यूज्ड व्हेन वी कंपेयर द टू थिंग्स, बट बेटर इज गुड फॉर दिस सेंटेंस बिकॉज here we compare the two only the two elements. Now moving to the rule number 9, which is very important, double comparative and superlative should not be used. Likewise, here is the most cleverest boy in the class. अभी देखें, most and cleverest, these are both are the superlative and comparative. अभी हम जस्ट एक ही कोई भी कंपेरेटिव या सुपरलेटिव वी यूज़ इन सेंटेंस एट वंस, दो सेंटेंस में कभी भी नहीं हो सकती। नाउ द करेक्ट वी हैव, ही इज़ द क्लेवरेस्ट बॉय इन द क्लास। अभी तो ये जो मोस्ट है इसको हम काट देंगे एंड आवर सेंटेंस विल बी करेक्ट जी। नाउ एडजेक्टिव्स पे हम आते हैं। Adjectives like unique, ideal, perfect, complete, universal, entire, and these all are not be comparative. ये ओ डिग्री से कभी भी कंपेयर नहीं हो सकते। Likewise, it is the most unique thing, but here it is the unique thing because unique is itself is the most important and the most last and superlative degree of its own of any other thing. Likewise, it is the unique thing. और ऊपर हमें क्या मिला हुआ, it is the most unique thing, नहीं, most unique in no sense, this it is the unique thing. So hope it's understood. All the adjectives which refer to the same noun should be in the same degree of comparison. जैसे देखें, he is the wisest and honest worker in the office. अभी देखें, he is the wisest and honest worker in the office. देखें, wisest तो हो गया यूज़, मगर जो honest है, honest जो है वो comparative डिग्री है। सो इसी में ही हम नीचे में for here we also use the comparative degree, सो वो भी हमें शो करेगा कि हम we use here the most honest, then the sentence will be completed and it shows like that, he is the wisest and the most honest worker in the office. Now moving to the next, which we have, much too is followed by the unpleasant adjective, whereas too much is followed by the noun. Likewise, much too plus unpleasant adjective है हमारे पास, और टू मच मतलब नाउन के लिए यूज़ होता है। दिस इज़ यूज्ड फॉर द नाउन्स। अगर नाउन की बात करते हैं तो कोई भी अनप्लीजेंट एडजेक्टिव होगा तो उधर हमारे पास यूज़ होगा मच टू। फॉर लाइकवाइज वी हैव एग्जाम्पल हियर, वी हैव टू एग्जाम्पल्स। इनकरेक्ट, हिज फेल्यूर इज़ टू मच पेनफुल फॉर मी, but this is incorrect. The correct is his failure is much too painful for me. Here is much too because here adjective, which is adjective जो है वो painful है, and which is unpleasant. So मैंने adjective को highlight कर दिया है, which is unpleasant. So इस वजह से हमारे पास जो use होगा वो much too होगा. So this is the correct now. मूविंग टू द टू मच, उसकी हम करेक्शन करते हैं। तो हिज वाइफ्स रूड बिहेवियर गिव्स हिम मच टू पेन, बट नाउ हमारे पास जो यहाँ पर है वो एक नाउन की बात चल रही है, तो वी यूज़ टू मच बिकॉज हेयर वी सेट इन अ रूल दैट
too much used when we have a noun. Here the wife and his behaviors are both the nouns. That's why his wife's rude behavior gives him too much pain. Now moving to another, now which we have quite and all are not used together. ये बहुत हम मिस्टेक्स करते हैं while we using the speaking also. He is quite alright. What? No. According to the rule, the quite alright which cannot be used. But here the proper and right sentence we have is he's quite right. The quite right means he's good, but all here is not be used. And another use we have is he's all right. अभी यहाँ पर quite इनके साथ use नहीं होगा. Now coming to the next, we have formula number 14. At present means at the present time, but we always use both in speaking and in writing. And presently means shortly. These should be not be confused in any way. Now nothing more can be done presently, but the correct is nothing more can be done at present. मतलब जैसे इस सेंटेंस का सेंस दे रहा है कि इस वक्त फिल वक्त नथिंग मोर कैन बी डन एट प्रेजेंट. अभी इस वक्त कुछ भी नहीं हो सकता. दैट्स वाई वी कैन नॉट यूज प्रेजेंटली बट वी यूज एट द प्रेजेंट. दिस फ्रेज मीन्स दिस वर्ड्स एट द प्रेजेंट मीन्स at the present time. That's why we are confused in different ways. Now we have incorrect sentence another. He will come back at present. He will come back presently means shortly. Now he will come back presently मतलब के shortly after short period of time he will come back. Now हमारे पास अभी कहानी शुरू होती है conjunctions की. We have 2 conjunctions, sentence and formulas, rules here. Use of conjunction. 2 conjunctions should not be used in same sentence. For example, although she was tired, but she still went on working. Now we have the 2 conjunctions here. One is although and other one is but. These 2 conjunctions are not used in the same sentence in one sentence according to the English grammar rules. But we have correct example. Although she was tired, she still went on working. We escape, we cut off but and we use directly as although she was tired, she still went on working. So this will be the correct example. Now hardly and securely should be followed by when or before, but not by then or that. We have simply hardly did I reach the station then the train left it. मैं मुश्किल से ही स्टेशन पे पहुंचा बट मगर जो ट्रेन थी वो स्टेशन छोड़ चुकी थी. बट नाउ हेयर हार्डली डिड आई रीच द स्टेशन व्हेन द ट्रेन लेफ्ट इट. मैं पहुंचा जब ट्रेन जा चुकी थी. दिस इज द करेक्ट यूज. सो रिमेंबर एंड नेवर फॉरगेट दिस. नाउ मूविंग टू द अनदर नेक्स्ट यूज ऑफ प्रपोजिशंस. We have principle of verb and preposition example. Likewise, principal verb is used after, about, after, at, before, for, from, in, on, to. That verb must be ing fourth form. मतलब के अगर हम जुमले में इसको इम्प्लीमेंट करें देखें, you prevented me from to do it. Now this is incorrect. अगर कोई भी वर्ड यूज होगा इन दीज वर्ड्स लाइक आफ्टर, अबाउट, बिफोर, फ्रॉम, फॉर एंड इन, ऑन, सो दिस वर्ब विल बी इन द फोर्थ फॉर्म. तो दिस इज द कॉमन. यू प्रिवेंटेड मी फ्रॉम डूइंग इट. सो रिमेंबर दिस. नाउ moving to the 18. After transitive word like discuss, describe, reach
order, tell, demand, attack, resemble, ridicule, etc. So we directly use the object and no preposition is used after the verb. हम डायरेक्ट यूज़ करेंगे. द पोएट डिस्क्राइब अबाउट द ब्यूटी ऑफ ट्यूनल इन हिज पोएम. नाउ हेयर डिस्क्राइब अबाउट द ब्यूटी, बट ये एक बिल्कुल करेक्ट इनकरेक्ट सेंटेंस है, बिकॉज हेयर द वर्ड डिस्क्राइब्स मीन्स जो डिस्क्राइब वर्ड है वो खुद ही अपनी पहचान बता रहा है, वो खुद ही डिस्क्राइब कर रहा है द ब्यूटी ऑफ नेचर. So why we use about the beauty of nature? So a pronoun must agree with its incident in person, number and gender. Like each of these boys has done their homework. But what we use? Incorrect. Each of these boys has done his homework. Each of these boys has done. Now we never forget by using a speaking, so this agreement will correct the proposition used. When two or more singular nouns are joined by and the pronoun used for them must be in plural. Like both Raju and Ravi have done his homework, but both Raju and Ravi have done their homework. So जैसे ऊपर प्लूरल में फार्मूला में बताया गया है, तो उसी तरीके से it will be used in that way. Now at the last, when two or more singular nouns join by or या nor, either या neither, nor, the pronoun used for them should be in the singular. For example, neither Ravi nor Raju has done their homework. But here, neither Ravi nor Raju has done his homework. क्योंकि the agreement shows between his homework and the Raju. So this was, I guess, the last example and last formula of this lecture. So we'll meet in next lecture, inshallah.